Hello everyone, welcome to Bhardwaj classes. Myself Madhuri Bhardwaj. Today we will start exercise 4.4. In this exercise we will discuss about the roots of the quadratic equation. इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूट्स के बारे में, जहां हमने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो कब एग्जिस्ट करते हैं और कब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप यूज करते हो तो वहां पर हम क्या फाइंड आउट करते थे, डी फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो उसी से लिंक करते हैं, व्हेन द डी इज ग्रेटर देन 0 then the roots of the quadratic equation are real and distinct. And when the d is less than 0, then the roots of the quadratic equation does not exist. And when d equals to 0, then the roots of the quadratic equation are equal. ठीक है। तो इसी से हम रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि रूट्स का क्या नेचर है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले से हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए जब आप कंपेयर करोगे तो a आपके पास क्या मिलेगा, 2, और b -3 5, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके टर्म्स आ गई है जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कि अब देखिए जनरल इक्वेशन से जब आपने कंपेयर किया तो आपको ए की वैल्यू क्या मिली, 2, एंड बी -3 एंड सी इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम डी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। The value of d is -3, so -3 whole square -4, and the value of a is 2 and the value of c is 5. Now -3 whole square is 9, ठीक है। अब 9 minus 40, then we get -31, okay, which is less than 0. अब देखिए यहाँ पे जो d की वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या है, लेस देन 0 है। इट मीन्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द roots of the equation are does not exist, does not exist। क्लियर हुआ। देखिए हमें यही डिस्कस किया था ना कि जब d हमारा लेस देन 0 होगा तो जो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा देखिए d जो है लेस देन 0 फाइंड आउट किया हमने, तो हमारे जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। नाउ सेकंड पार्ट, by comparing from the general form of quadratic equation, a is 3 and b is -4 root 3 and c is +4. Okay, now find the value of d. D equals to b square minus 4ac. The value of d is -4 root 3 whole square and 4. The value of a is 3 and the value of c is 4. Okay. Now find the square of -4 root 3. देखिए -4 स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16, एंड √3 स्क्वायर जब आप करोगे तो 3, 16 3 48 एंड -48। तो यहां से हमें जो d की वैल्यू मिली वो क्या मिलेगी, 0, ठीक है। अब देखिए जब d की वैल्यू 0 आपने फाइंड आउट की है, इट मींस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। यही कंडीशन हम नोट डिस्कस की थी कि जब d हमारा इक्वल टू 0 निकलता है तो हमारे जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमारी जो d की वैल्यू वो क्या निकली है, 0 निकली है। इट मींस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the roots of the equation are equal.
Okay, clear हुआ? Are equal. Now we find the roots of the equation. To finding the roots of the equation, we use the formula x equals to minus b plus minus root d by 2a. Okay, एंड आउट कर देंगे. हमारे पास जो d की वैल्यू है वो 0 है, तो जो x हमारे पास होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू, इट मीन जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे, माइनस का b बाय 2a और माइनस b बाय 2a. ठीक है, b की वैल्यू आपके पास क्या है, -4√3, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, देन वी हैव 4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 और 4√3 divided by 2 into 3. ठीक है, 2 to the 4 and √3 से जब आप √3 को कट करोगे then we get 3. ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 to 4 and √3 divided by 3 then we get 1 by 3. तो finally we get the value of x is 2 by √3 or 2 by √3. These are the roots of the quadratic equation. Okay, but by comparing from general equation, we get the value of a is 2 and b is -6 and c is 3. Now find the value of d by using the formula d equals to b square minus 4ac. The value of b is -6, so -6 square minus 4, a is 2 and c is 3. -6 square is 36 and this is 24. Now 36 minus 24, then we get 12, which is greater than 0. It means the roots of the equation, the roots of the equation are real and distinct. Okay, clear हुआ? Now we find the value of x by using the formula x equals to minus b plus minus root d by 2a. Here x is the roots of the equation. Okay, x equals to minus b, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है, -6, तो माइनस माइनस प्लस, +6 होगा and root d, and the value of d is 12 divided by 2, and the value of a is 2. 6 प्लस माइनस आप 4, आप √12 को लिख सकते हैं 2√3 and this is 4. Now taking 2 common from numerator and denominator, then we get 3 plus minus √3 divided by 2. Now write this term like as 3 plus √3 divided by 2 or 3 minus √3 divided by 2. These are the roots of the quadratic equation. Okay, clear हुआ? Now, question number 2. Find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है कि जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, उसका जो नेचर है इक्वल गिवन है. इट मीन्स इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, d इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे. d इक्वल्स टू 0 आप अप्लाई करके यहाँ से k की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, okay, now we find the value of d by using the formula d is equal to b square minus 4ac. ठीक है, first of all we compare this equation by the general form of quadratic equation, then we get a equals to 2 and b is k and c is 3. Okay, now apply d equals to b square minus 4ac. Here b, the value of b is k and 4, the value of a is 2 and the value of c is 3.
ओके, के स्क्वायर माइनस 428 8324। ठीक है, अब हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स के लिए आप देखोगे कि डी क्या होगा, इक्वल्स टू 0। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी इज के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर इक्वल्स टू 24। नाउ के इज रूट 24। ठीक है, आप 24 को क्या लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से लिखेंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या कॉमा ले सकते हैं, 2, तो ये आपको मिलेगा प्लस माइनस 2√6। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। नाउ सेकंड पार्ट, के एक्स मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6। देखिए यहाँ पे भी हमें d इक्वल टू 0 अप्लाई करना है, लेकिन पहले क्या स्टेप यूज करेंगे हम कि आप इसको सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी क्या होती थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब हम के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 के साथ, तो हमें उसी जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स इंटू एक्स, kx square and multiply with 2, then minus 2kx plus 6 equals to 0. Now compare with the general form of quadratic equation, then we get the value of a is k and b is minus 2k and c is 6. Now find the value of d by using b square minus 4ac. Here the value of b is minus 2k, minus 2k square 4, and the value of a is k and the value of c is 6. This is 4k square and this is 24k. Now using d equals to 0 for the condition of equal rows. ठीक है, 4k square minus 24k equals to 0. तो 4k square equals to 24k k and k equals to 4 6 24. This is the value of k. Okay, clear हुआ? Okay, 4k square minus 24k equals to 0. From here we take 4k as common. तो 4k जब आपने कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म क्या होगी, k minus 6 equals to 0. Now 4k equals to 0 or k minus 6 equals to 0. From here we get the value of k is 0 or k equals to 6. ठीक है, तो k equals to 0 is not possible. Is not possible. So finally the value of k is k minus k equals to 6. ठीक है, is it clear? Now question number 3rd. Question number 3rd, is it possible to design a rectangular group whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. ठीक है, देखिए हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप दिया हुआ है जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेड के, और जो एरिया गिवन है वो 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो let the breadth let the breadth of the rectangular group be x meter, then length of the rectangular group is 2x, क्योंकि हमें रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रुप इज 2x। ठीक है, नाउ एरिया इज गिवन, area equals to 800 meter square
ठीक है, and the formula of area is L into B, 800, and the value of L is 2x and breadth is x, 800. ठीक है, from here we find the value of x. ठीक है, so this is x square, 800 divided by 2, so we get 400. Now x equals to under root 400, then we get plus minus 20. This is the value of x. Okay, so we have need to find the length and breadth. Okay, so breadth is 20 and length is 2 multiply 20. It means 40 meter. Okay, clear for? Now question number 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. देखिए यहाँ पे हमें जो सम गिवन है वो टू फ्रेंड्स की एज का सम गिवन है. ठीक है, तो क्या करते हैं हम किसी एक फ्रेंड की एज को अज्यूम कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें दूसरी फ्रेंड की जो एज है प्रेजेंट एज वो मिल जाएगी. ठीक है, तो let the present age let the present age of first friend bx, then the present age of second friend is 20 minus x. ठीक है, now 4 years ago first friend age क्या होगी, first friend age is x minus 4 and second friend is 20 minus x minus 4. It means 16 minus x. Okay. अब देखिए इसके बाद हमें क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एज was 48. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, तो नाउ x minus 4 multiply with 16 minus x, then the product is 48. ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट गिवन दिया हुआ 48, तो यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं x into 16 is 16x. Now x into minus x is minus square. Minus 4 into 16 is minus 64. Minus minus plus, and this is 4x. Now 48 minus x square, 16x plus 4x is plus 20x minus 64 and minus 48 equals to 0. Minus x square plus 20x minus minus plus, this is 112. ठीक है, 112. Now from here we take minus sign as common, then we get x square minus 20x plus 112 equals to 0. ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिफिकेशन आ चुकी है. अब यहां से आप क्या कर लेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d बाय यूजिंग b स्क्वायर माइनस 4ac. द वैल्यू ऑफ b इज minus 20, तो minus 20 whole square 4, and the value of a is 1 and 112. ठीक है, this is 400 minus this is 448. ठीक है, so finally we get the value of d is 48, which is less than 0. It means equation has not any real value. Then this situation is not possible. It's not possible. Okay, clear now?
Now, question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है जिसका पेरीमीटर आपको 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, ब्रेथ को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द breadth of the path be x मीटर, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 80 मीटर, एंड द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज 2l प्लस b इज 80 मीटर। ना l और ब्रेथ हमने x अज्यूम किया था, 80 l plus x is equal to 40. From here we get the value of length is 40 minus x meter. ओके, अब देखिए हमें एरिया क्या गिवन दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमें 400 गिवन दिया हुआ है। एरिया इक्वल्स टू 400 and the formula of area is L into B. L is 40 minus x and breadth is x, 400. From here we get the quadratic equation is 40x minus x square minus 400 equals to 0. By taking minus sign as common, then finally we get the quadratic equation x square minus 40x plus 400 equals to 0. Now find the value of d. D equals to b square minus 4ac. Here the value of b is minus 40, minus 40 square, and 4, a is 1 and c is 400. Okay, the square of 40 is 1600, and from here we also get 1600. Then 1600 minus 1600 is 0. It means जो रूट्स होंगे क्वाड्रिफिकेशन वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि we get the value of d is 0. It means equation has real and equal rules. ठीक है, now we find the roots of the equation by using the formula x equals to minus b plus minus root d divided by 2a, and the value of d is 0. That's why finally we get the formula is minus b by 2a or minus b by 2a. These are the rules. ठीक है, and the value of b is minus 40. So this is plus 40 and 2 into 1 and 40 2 into 1. ठीक है, so we get the value of x is 20 and 20. Then rectangular park is possible and rectangular park is possible and its length is 20 meters and breadth is also 20 meters. Okay, now clear हुआ, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी और आपको सिर्फ नेचर ऑफ द रूल्स माइंड में रखना है कि नेचर ऑफ द रूल्स आपको पता है तो इजीली आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होप तो सभी को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। और हाँ, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो उसकी आपको पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो जो नोट्स है पीडीएफ फाइल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ठीक है, कोई पे एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ठीक है, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ थैंक यू।